Okay, now is the audio problem solved? I mean, can you hear my voice? Is it audible enough now? No? Yes, no, anything? Is it audible enough? Yes? Okay, okay, okay. Sorry. Okay. So I think now it's working. Okay. Uh Audible. चलिए ठीक है. Thank you so much. So I'm using a new system, so that is why there are some hiccups. So it's first day. So all right, चलिए दोस्तों. So let us start today's session. So I was just saying that the next training is scheduled on August 13th and 14th. So anybody who is interested, you can WhatsApp and you can join for this training. WhatsApp number is here, and once you are added, you will be once you register, you will be added in the Telegram group support for 3 months. So let's start today's session. I think we are very much delayed. So right now, as I speak, we will have a look at the global markets first. So right now, the US market is trading higher. S&P 500 is trading quite higher by 30-40 points. And yesterday we saw the Fed raising rates by pretty much expected lines with 75 bips की एक्सपेक्टेशन थी एंड यूएस फेड ने उस चीज को जो है रेज किया है सो दैट वाज pretty much factored in and market rallied after that. But what's more important is the commentary given by the US Fed. So the commentary is very simple. The US Fed has said that going forward there can again be a rise by say 75 bips, but it will be like data dependent. So depending on how the macro data comes, उसके basis पे they will decide how much to raise. But ये जो बात उन्होंने कही है कि data dependent है, that is something which will keep the markets on edge, because data के हिसाब से फिर market चलेगा and again we will be back to square one. सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. कॉमेंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर फेड 0.75 अगर रेस करता है तो आई थिंक थोड़ा सा जो है मार्केट में ट्रबल होगा. एज ऑफ नाउ मार्केट इज रिलैक्स्ड, मार्केट इज ट्रेडिंग हाइयर. सो S&P 500 को अगर हम देखें तो इट हैज़ बाउंस टूवर्ड्स 40-50 एरिया. This is where some resistance should come. Okay, so this is a resistance prone area. We can see some sort of a trend line resistance developing over here, and this is the area where last time we have seen some sort of a decline. So 40-50, that is an area of resistance, and on the lower side now, yesterday's bottom, which is around 3900, that becomes the support for this market. So it's very simple. Till 3900 is holding up, the trend is up with intermittent resistances. Right now 40-50 is one resistance, and then 4100 will be another resistance. Now what I think is that today's data is bad for the US economy as such, but the stocks are holding up. And I think tomorrow there can be some selling into these markets. So if any sort of a weakness starts to develop from this area, I won't be surprised to see again a pullback towards the 3900, which I feel there is a very good chance of happening. And below 3900, below the Fed day, below 3900, I think markets will start to go again back towards 3700. So right now 3900 is the level to watch. That's the main support area over here. And on the higher side, 40-50 is one resistance, followed by 40-80, which is the last support that was taken down in the month of say June. So this was the breakdown area, and we are coming back all the way over there to retest the supply. So 40-80. So this is the vulnerable area. This is the resistance zone that I'll be watching in the S&P 500. Now let's have a look at the Nasdaq, क्योंकि कल Nasdaq में जो है 4%, more than 4% की एक रैली हुई है. And that is something which was last seen in the month of I think June to 2020, somewhere around that. So yesterday Nasdaq has made a big rally, but Nasdaq is still not able to cross the recent swing high, which is very close to the previous resistance area, the previous breakdown area over here. So this is something which I'm watching very keenly, because we must trade and sustain above the event day. So yesterday was a good event, a big event, so we must trade above this level, or else what will happen is because we have surged so much, it will either turn into a time correction like this, or it will turn out to be a
failure. So a breakout failure kind of thing can develop, and again we go back towards the lows, and this is now the last support for the Nasdaq. So 12,000 का लेवल जो है दोस्तों, ये लास्ट सपोर्ट लेवल है Nasdaq पे. अगर 12,000 अगर टूटेगा तो फिर आई थिंक Nasdaq इज गोइंग टू सी अ बिग बिग डिक्लाइन. नाउ व्हाई Nasdaq पे इतना बेरिश हो जाऊंगा मैं बिलो 12,000? बिकॉज yesterday we have seen that all the IT companies, the Google, Microsoft, and all those companies, they were up by a big percentage. So they were up by 4 to 5%. So agar individual stocks may, after such a huge surge, if it is unable to take out the swing high resistances, then I think I'm having my reservations about this entire rally. Also, I don't like the diminishing volumes over here. So that is something which I really don't like, especially after you have a breakout like this. And then on the retest there should have been some good volume, but that is missing. So still we are not out of the woods. Yes, we have to play a totally support resistance game rather than a trend game over here. So I think for the time being, Nasdaq has a pretty good resistance at 12,800 level. Only and only about this breakout happens, only then we should be a fresh buyer, or else just trade in this big range. And below 12,000 all bets are off on the long side. So that's the update over there. Now interestingly, जो Dow Jones का chart है, that is not looking very great to me. S&P 500 का chart ठीक है, but the Dow Jones is not looking great to me, because if you look at the chart of Dow Jones, we are approaching a good resistance zone like this and a supply driven zone like this. Also, the recent structure may turn into some sort of a rising wedge structure, and again this can give a false breakout and we might trip on the lower side. So there are lot of possibilities, ifs and buts hain. So we have to go gradually, slowly, and take one day at a time. I think that approach is going to be much better one, rather than just thinking that it's a bull market, yeah, it's a bear market. Take one day at a time. If you are a stock trader, then treat your stocks accordingly. Don't look at the index. हमने वही चीज अपने इंडियन मार्केट्स के लिए एडवाइस किया था, एंड टुडे यू सी बजाज फाइनेंस, इट रैलीड लाइक क्रेजी, right? So treat index differently, treat stocks differently. That's the update coming from there. Then small cap index, that is okay. बाकी यूरोपियन मार्केट्स की तरफ अगर हम बढ़ें तो जर्मन डैक्स, that is still trying to shoot higher after the Fed policy is over. French market, that is doing pretty good. So I think even that will approach resistance in coming days over here. And the UK markets, they never do anything, so they are simply just going sideways. So these are some of the updates on the equity markets. आज लगे हाथों हम थोड़े और मार्केट्स को देख लेते हैं, हैंगसेंग को देख लेते हैं. तो हैंगसेंग इज द वर्स्ट मार्केट राइट नाउ. सो देयर इज नथिंग bullish about Hang Seng, and it is just sitting on a triangle which will eventually again crack lower. So I think this market is gone forever. The Hang Seng market, if you see, it peaked out somewhere in 2021 over here, and since then the only direction it knows is on the lower side. So I think Chinese have eaten up the Hong Kong market, and this market is doomed. This is precisely the reason why the emerging market ETF, that also remains bearish. So if you compare the Hang Seng and the ETF, you will see ditto same chart hai dono ka, and that is something which has been bearish. एंड इसका एडवांटेज इंडिया को मिला है, क्योंकि एशिया में इंडिया जो है एक लार्ज इकोनॉमी है, एंड विद हांगकांग मार्केट गोइंग डाउन, India has attracted the flows, the capital flows. So that is one reason why Indian markets tend to outperform the emerging market index. Japanese Nikkei को एक बार देख लेते हैं, जो कि again एक resistance zone पे है. You can see it's again in a very very big supply zone in this particular area. So I think all in all, the equities market as a whole, they are at some vulnerable point. So please be extremely careful. यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश या बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जो है काम करना है. लेट्स टॉक अबाउट करेंसीज. तो सबसे पहले हम यूएस डॉलर को देखते हैं. सो यूएस डॉलर, if we watch the long term chart, so we are in the long term chart still pretty good, and we are in an uptrend. Recently we broke higher, and then we are doing some sort of a time correction. So here this was the last breakout area, and we are still retesting. Now despite the US Fed event, what is surprising is the dollar is not giving up, okay, while the equities market are cheering. So this is something which we need to watch carefully, because unless the dollar starts to actually become weak,
these rallies will not last in the equity market. Okay, so the equity markets, as you can see, this is where the equity market topped, and this is where the US dollar made its bottom before the rally started. So the US dollar, I'm still bullish on US dollar. I think US dollar still has a 2.5% upside pending. So I think very easily US dollar should reach till 110, 112, and that is where the actual top should come in the US dollar. Because last time I had showed you the monthly chart of US dollar. So this is the monthly chart, and here you can see this is the long term resistance on the monthly chart of US dollar. So we are there, but still some more upside is not ruled out. Okay, so I would like to see this chart getting absolutely completed in next 2 3 months, and then I'm expecting a larger decline to happen in the US dollar. Okay, so it's like this, we have gone up and we should come down. So US डॉलर में अभी भी शॉर्ट टर्म मार्केट्स में बुलिशनेस मेरे ख्याल से मेंटेन रहेगा. अगर हम बाकी करेंसीज की बात करें तो यूएसडी आईएनआर को सबसे पहले लेते हैं. So USDINR, I think it is in some kind of a trouble. I think, but still जब तक 79 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, we should be still bullish. हम वेट करेंगे अच्छे लेवल का बाइंग के लिए, बट द ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट और थोड़ा सा अभी सॉफ्टनेस है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 79 का जो स्तर है यहाँ तक ये आ सकता है. दैट इज वेयर द सपोर्ट्स आर देयर, and probably from there again it will start to rally towards 81 and a half and maybe 82. So this is the trajectory that I'm expecting in the USDNR to happen. As of now, RBI is very maintaining its control. So I think because of that, we will see levels of say 79 to 80 operating on the USD INR. Okay, let's talk about euro. So today euro got a beating. So we are bearish on the euro INR and GBP INR. So both these currencies, after shooting up yesterday, they have given back. So euro is down, British pound, as you can see, it moved up, it broke the previous range, and but today British pound may be hammering ho rahi hai. Why? Because it is again at some sort of a resistance. So it is at a major resistance coming from some larger trend lines. Okay, so last time it peaked here and then the crash started. Right now again we are back to that level. Also we are very close to some more resistance in this form. So it's not going to be easy for GBP to maintain above these levels. I don't think GBP is going higher. I think आज इसने जो है टॉप बना दिया है, and then we are aiming for new lows to come in the British pound. As a result of which, what happened today is because of the weakness that came in the euro and the British pound market, हमें जो है आज इंडियन पेयर्स में काफ़ी अच्छा हमें डिक्लाइन देखने को मिला. एंड टुडे वी इनिशिएटेड सम फ्रेश शॉट्स, वी एडेड आल्सो, एंड एज यू कैन सी दिस इज द चार्ट ऑफ ऑल द इंडियन पेयर्स. सो यूरो में हमें जो है बहुत अच्छा एक डिक्लाइन मिला, एंड आई गिव द शॉर्ट कॉल आल्सो राइट एट द टॉप समवेयर 81.90, एंड देन इट फेल लाइक अ वाटरफॉल, और बहुत ही बड़ी इसमें जो है डिक्लाइन हमें इंट्राडे मिला. बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स ने इसे लिया भी. Similarly, then we shorted this, which is say आपका जो GBP INR पेयर है somewhere near 97.4 के आसपास, and then again we got a very big decline in this market. Now if I talk from the NSE Forex futures, तो कुछ levels की बातें कर लेते हैं. So this is the chart of the USD INR, as you can see. USD INR में दोस्तों अभी जब तक USD INR 80 रुपीज़ के ऊपर नहीं जाता है तब तक I think it is going to remain bearish. एंड आरबीआई इज वेरी वेरी एग्रेसिव. सो आरबीआई जो है इसे पूरी तरीके से कंट्रोल में ही रखना चाहता है, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वॉलिटिलिटी एकदम से खत्म हो चुकी है इस बाजार में. सो USDINR, I think it will pretty much trade in the range of 79.5 79.5 से लेके आपका 80.25, इस 75 पैसे रेंज में मैं देख रहा हूँ अगले नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी तक USDINR के. ठीक है, तो अगर हमें ये 79.5 के आसपास दिखाई देगा तो हम बाय करेंगे. स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा 79 का, और 80.25 हमारा पहला टारगेट होगा, फॉलोड बाय 81 rupees. Okay, so that is the main trajectory for USD INR. So that's the update over there. Now let's talk about the Euro INR. So as you can see, we are bearish on Euro INR, and every day we are maintaining the shorts. Today also we got a hammering opportunity, and it has closed at the lows. Now this is the area 81 rupees.
ये जैसे ही 81 के नीचे का दोस्तों क्लोजर देगा, आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड 79.5, जिसके बारे में हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। सो यूरो पे कोई भी रैली आता है 81.90 तक, 81.80 तक, दैट इज दिस सेलिंग अपॉर्चुनिटी, और हमें यूरो में शॉर्टिंग करना चाहिए। सो द लेवल्स आर प्रीटी मच सेम। 81.90 में यहाँ पे लिख देता हूँ, मे बी 81.70 तक आप इस 20 पैसे में शॉर्टिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस के तौर पे आप जो है 82.25 आप रख सकते हैं, एंड डाउन साइड में टारगेट है पहला 81 रुपीज, एंड बिलो दैट द नेक्स्ट टारगेट इज स्ट्रेट अवे 80, और पोजिशनली 79.5 का ये मेरा टारगेट है। सो दीज आर द लेवल्स टू वॉच, एंड ट्रेंड इज फर्मली बेरिश ऑन द यूरो INR। नेक्स्ट जो पेयर है वो है ब्रिटिश पाउंड। सो ब्रिटिश पाउंड में आज जो है बहुत ही अमेजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। आई थिंक आपको ये शायद दिखाई ना दे, बट दिस इज द बेरिश पिन बार। सो देयर इज no body, only wick. So it's a brilliant reversal pattern that has come. Yesterday we discussed this gap area कि अगर रात को जो करेंसीज हैं स्पॉट मार्केट में अगर वो तेजी करती हैं तो ये आज ऊपर खुलेंगे, और यही जोन मैंने आपको दिया था कि यहाँ से जो है हमें शॉर्टिंग में आ जाना है। सो आज ये एग्जैक्टली गैप फिल यहाँ पे हुआ, एंड देन रेस्ट ऑफ द डे इट डिक्लाइन। सो इट हैज क्लोज्ड एट इट्स लास्ट सपोर्ट। सो आज का जो क्लोजर है लगभग 96.8, दैट इज द लास्ट वैल्यू। ओके, सो कल अगर ये दोस्तों गैप डाउन खुला तो फिर ये ब्रिलियंट तरीके से जो है आपको फॉल दे देगा। तो जीबीपी आईएनआर में यही वो लेवल है 97.5, आप पकड़ लीजिए, यही वो जोन है जहाँ पे आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, और इसका पहला जो एक टारगेट है दैट इज से 96.5, एंड बिलो 96.5 गेम ओवर। आई थिंक दैट विल बी द एंड ऑफ गेम फॉर द बुल्स, एंड ऑन द लोअर साइड फर्स्ट टारगेट मैं एक्सपेक्ट करना चाहूंगा 94.8 का, विच इज अ बिग टारगेट। ठीक है, ये इंट्राडे में टारगेट्स नहीं आएंगे, बट दीज आर टारगेट्स that might come in coming days. Okay, so 94.80, that is the target for GBP INR as of now, और पोजिशनली मैंने आपको बता दिया है कि मेरा टारगेट है 92.5 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पेयर विच इज योर JPY INR। सो इसमें भी हम बेरिश साइड में हैं, और हम अभी भी इसमें बेरिश मेंटेन करेंगे। कल के लिए आज का हाई जो है एक मेजर लेवल है 59.30, सेल ऑन राइज जो है करना है। अभी एज ऑफ नाउ येन में थोड़ा स्ट्रेंथ है, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है थोड़ा ऊपर खुले, बट वी विल रिमेन बेरिश। ओके, सो जब तक ये नए कॉन्ट्रैक्ट में जब तक ये 59.5 वगैरह क्रॉस नहीं करता, इट्स अ सेल ऑन राइज, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ डेज कि ये इवेंचुअली इट विल स्टार्ट टू गिव अप। सो दैट्स द अपडेट ओवर देयर। सो विद दिस I am done with the forex market. Now let's talk about the commodities market, जहाँ पे आज क्रूड ऑयल में बहुत ही शानदार एक ट्रेड हमें मिला है, एंड क्रूड में जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं आई थिंक दे कैन वाउच फॉर द ट्रेड। सो वी गॉट अ वेरी नाइस शॉर्ट ट्रेड डेवलपिंग हियर, एंड इसके बारे में जो है मैंने एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया था कि दैट आई विल बी looking to short near 79.50, 79.70, and this is the area where we shorted, and huge पंपर डिक्लाइन अगेन। सारे टारगेट्स मीट हो चुके हैं। 7650 के आसपास मेरा आखिरी टारगेट था, एंड आई वांट कि जितने ग्रुप मेंबर्स अगर लाइव देख रहे हैं तो आप जो है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो दिस इज अगेन वन बिग गुड ट्रेड इन कमोडिटीज। नाउ व्हाट अबाउट द प्लान फॉर टुमारो। सी अभी क्रूड में कोई फ्रेश ट्रेड मैं नहीं एडवाइस करूंगा, और कल के लिए भी मैं अभी कोई व्यू नहीं दूंगा। बाय, बिकॉज इट विल डिपेंड कि आज का कैंडल कैसा बनता है। सो अगर आज का कैंडल इसी तरीके से बनता है, ओके, देन आई थिंक कल जिस तरफ क्रूड खुलेगा हमें फिर उस साइड ट्रेड करना पड़ेगा। सो क्रूड में अभी कोई ट्रेड मैं नहीं दे रहा हूँ कल के लिए, बिकॉज वी आर रीचिंग एट सम इन्फ्लेक्शन पॉइंट जहाँ पे क्रूड में एक बहुत बड़ा अप या डाउन मूव की शुरुआत होने वाली है। ओके, सो वी आर pretty in a small range as of now in last few days, and overall अगर हम देखें तो we are at some trend line resistance, and these areas they are tapering down. So I think there is going to be some up down movement in this format, and it will squeeze, and then whichever side it goes that side will bring the real trade. So I think as of now आज का जो हाई है 7960 वगैरह, दैट इज़ अ वेरी क्रूशल लेवल टू वॉच, एंड टुमारो हम इसमें फ्रेश व्यू लेंगे। जितने ग्रुप मेंबर्स हैं मैं उन्हें ट्रेड में अपडेट कर दूंगा। सो दैट्स द व्यू फॉर क्रूड ऑयल एज ऑफ नाउ। अगर हम नेचुरल गैस की तरफ चलें
So it is again going down today. So I think natural gas after today's inventory, uh, I think it is becoming bearish. But still मैं natural gas में कोई trade या कोई view इस समय नहीं देना चाहता, क्योंकि I think it is purely driven on news. और रशिया यूक्रेन फ्रंट पे जो है जो भी न्यूज़ आता है, न्यूज़ के वजह से जो है बहुत ही इसमें वॉलेटिलिटी एंड मूवमेंट आ जाता है. सो आई थिंक एनजी से दूर रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच होगा. एंड अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल मुझे 660 पे जो है एक सपोर्ट दिख रहा है, विच इज़ एट 658. सो रफली यू कैन से 660, दैट इज द सपोर्ट लेवल फॉर एनजी. एंड मेजर रेजिस्टेंस है इसका 712. तो एनजी जो है इस समय 660 यानी 658, 660 से लेके 715, ये बहुत बड़ा रेंज है दोस्तों. ये बहुत बड़ा रेंज है, इसमें ट्रेड देना एंड इट्स वेरी वेरी रिस्की. सो हम एनजी से बाहर हैं. ओके, सो 660 से लेके 715, दिस इज द रेंज दैट इज लुकिंग ऑन नेचुरल गैस. अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एनजी में कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज़ आई सप्लाई कंस्ट्रेंट को लेके, आई थिंक एनजी एक ही दिन में 2 सर्किट मारेगा और ये सीधे 830 चला जाएगा. इट कैन बी अ बिग ब्लो ऑफ रैली टू फाइनली end this entire up move, and we can see a trend line peak happening somewhere over here. एंड अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड. सो मेरी तो एडवाइस पिछले काफ़ी दिनों से यही है, 6-7 दिनों से, कि एनजी से दूर रहें. आई थिंक एनजी को ट्रेड करना बहुत ही इम्पॉसिबल है इस समय. लेट्स टॉक अबाउट सिल्वर एंड गोल्ड. तो आज सिल्वर जो है बहुत ही बम्पर रैली के साथ 56,000 के ऊपर सिल्वर जो जा चुका है. इनफैक्ट 57,300 पे ट्रेड कर रहा है. एंड रिकॉल कि हमारा क्या व्यू था सिल्वर को लेके. वी हैड सेट कि सिल्वर एक फाइनली इट हैज़ कम एट अ लॉन्ग टर्म डिमांड जोन. बट क्योंकि ये अभी इसने एक सपोर्ट को, मेजर सपोर्ट को ब्रेक किया है, ये जब 56,000 के ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें बाय करेंगे, राइट. और जनरली क्या होता है कि ऐसे जो क्रूशल बॉटम्स या टॉप्स बनते हैं तो हमें पहला मूव वेट करना होता है. ओके, सो दैट वी डोंट डू दी बॉटम फिशिंग. ओके, तो ये पहला मूव मैंने पर्पसली सिल्वर में छोड़ा. व्हाई? बिकॉज आई वांटेड टू सी इफ माय रीडिंग ऑफ द चार्ट इज करेक्ट और नॉट. अगर मेरी रीडिंग सही है तो ये जो है आफ्टर द फेड इवेंट इट शुड रैली इन अ बिग मैनर. और ये चीज आज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. 4.5% की उछाल एंड अ वेरी बिग वॉल्यूम कंफर्म्स दैट इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इस स्क्रिप्ट में आ चुका है. सो सिल्वर इज नाउ ऑल बाय ऑन डिप. सिल्वर में हमें जो है दोस्तों कोई भी गिरावट अब मिले 56,000 तक बिंदास इसे बाय करना है. स्टॉप लॉस के तौर पे हम 53,500 यहाँ पे ले सकते हैं, just below this. Okay, so silver is a great buy on any pullback towards say 56,000, 55,000. एंड स्टॉप लॉस के तौर पे हम लेके चल सकते हैं आपका 53.5, so 53.5 कैन बी द स्टॉप लॉस. नाउ टारगेट्स आर वेरी वाइड. पहला ही टारगेट जो है ये लगभग 62,000 का है. ओके, सो ऑब्वियसली ये एक दिन के टारगेट नहीं है, दीज आर द ट्रेंड टारगेट्स दैट आई एम गिविंग. सो गोल्ड और सिल्वर पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले नहीं मैं एडवाइस करता, मैं ट्रेंड की एडवाइस करता हूँ. इसीलिए इनमें ट्रेड जो है बहुत कम आते हैं. ठीक है, मे बी 30-40 डे के साइकिल में एक ट्रेड आएगा, बट इट विल बी लार्ज ट्रेड. सो सिल्वर पे ये हमारा व्यू है एंड दैट इज द बाइंग जोन एंड बाइंग लेवल्स. अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी हम बुलिश थे, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रेड तो नहीं मिला है. सो नेवर माइंड, व्यू हमारा करेक्ट है. सो मे बी इन फ्यूचर अगर हमें मिलेगा तो हम बाय करेंगे. ठीक है, सो गोल्ड इज आई थिंक अगेन अप्रोचिंग सम रेजिस्टेंस नियर 51,550. वॉच आउट फॉर सम प्रॉफिट बुकिंग. और फिर नीचे की गिरावट जब होगी लगभग 51,000 या 50,800, उस समय हम देखेंगे. अभी कोई ट्रेड नहीं है. कॉपर की बात करें तो 640 के ऊपर कॉपर में तेजी है, ये बात हमने डिस्कस की है. और आज का बॉटम जो है लगभग 640 ही है. सो अगर किसी को यहाँ पे लॉन्ग करना है, बट थर्सडे रात को कॉपर लॉन्ग करना मैं एडवाइस नहीं दूंगा. एक दिन और रुक जाते हैं, मे बी कल अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बाय करेंगे. ओके, नाउ वी नीड टू कीप इन माइंड दैट दिस डजंट बिकम अ राइजिंग वेज स्ट्रक्चर. ओके, यानी 640 को सपोर्ट ले रहा है वो बात ठीक है, बट ऊपर इस तरीके से सिर्फ छोटे छोटे कैंडल से काम नहीं चलेगा. इट मस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू अ बिग कैंडल, जैसे भी सिल्वर में था. यदि ऐसा स्ट्रक्चर बनता है कि आने वाले 3-4 दिनों में ये 640 पे सपोर्ट तो लेता है बट अपसाइड कुछ खास नहीं है, देन the things will change. The things will change is that it might again come down, break this earlier bottom, okay, and then stage a rally. Something like this can happen. Okay, and probably this down move can coincide with the
rise in US dollar again for once and last. So इसलिए बी केयरफुल हियर, 640 के नीचे कोई भी लॉन्ग ना रखें. इमीडिएटली 660 और 665 का रेजिस्टेंस है. So that is where you should book profit, but keep in mind the scenario that I have explained just now. So we have to watch for next 2-3 sessions. बाकी मेटल्स पे अभी कुछ खास नहीं है. सो लेट्स एंड इट ओवर हियर एंड लेट्स टेक इथेरियम. सो इथेरियम इज अगेन वेरी बुलिश. सो इसमें जो है फ्रेश बाइंग वापस से आप शुरू कर सकते हैं. बाय ऑन डिप बिल्कुल करना चाहिए. सो एनीवेयर नियर 1600 इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. 1400 के नीचे का आपका स्टॉप लॉस है एंड टारगेट्स आर ऑल ओपन. सो आई एम नॉट गिविंग एनी टारगेट बिकॉज स्काई इज द लिमिट, कहीं भी जा सकता है. ठीक है, अगर हम सिंपली लेवल की बात करें तो ठीक है, पहला ही जो टारगेट आएगा वो आएगा 2200 2300 के आसपास. इट्स अ बिग टारगेट. दैट इज व्हाई आई एम नॉट गिविंग एनी टारगेट, क्योंकि इट्स ऑल ओपन. अगर बिटकॉइन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लास्ट टाइम टारगेट छूट गया था वो कंप्लीट होगा, विच इज 25,000 के आसपास. एंड इवन बिटकॉइन कैन क्रॉस. नाउ एनी बाइंग दैट यू आर डूइंग और एनी पुल बैक बाइंग यू आर डूइंग, अब फेड का जो कैंडल है दोस्तों, ये आपका बाय डिफॉल्ट स्टॉप लॉस है, चाहे कोई भी चीज हो, बिकॉज दैट वाज अ इवेंट डे. सो दिस इज योर स्टॉप लॉस इन एनी case and any type of a long that you are going to take. So with this I will wind up the crypto analysis, commodities analysis, forex analysis, and global equity market. Now let's come to the most important, which is your nifty and bank nifty. So after yesterday's move, we saw a big a gap up opening and followed by a continuation of the rally. Now, this is very likely to happen on a expiry day. So, on a expiry day, if you are breaking a resistance previous swing high with a big gap up, then it is most likely going to crush the other party, which is the shorters. That is why, yesterday I had said one thing very clearly कि अगर ये बड़ा गैप अप अगर खुलता है या बड़ा गैप डाउन खुलता है तो ये उसी डायरेक्शन में जाएगा. सो उसको फेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्टे आउट फ्रॉम दैट मूव एंड यू विल गेट योर अपॉर्चुनिटीज लेटर. सो आई एम श्योर कि आज बहुत लोगों ने जो है इसमें शॉर्ट्स वगैरह ट्राई किया होगा. लुकिंग जस्ट एट द चार्ट, ट्रेंड डे का डेवलपमेंट है, तो काफ़ी लोगों ने इसे शॉर्ट्स में ट्राई किया होगा ओनली टू सी इट गेटिंग फेड. So now what's the plan ahead? See, if we look at the chart of the Nifty right now. So we have broken the resistance zone of 16,660 से लेके 16,860. एंड हमने एक लेवल की बात की थी कि 16,980 ऑन द निफ्टी एंड 37,450 ऑन द बैंक निफ्टी. सो इफ आई ओपन द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड इवन दैट टारगेट. ठीक है, ऑल्दो आई वाज नॉट लॉन्ग, बट ये जो हमने डिस्कशन किया था कि आइदर बैंक निफ्टी विल मेक अ हाई एट 37,150, विच इट डिड on this day, on I think on Monday, and we saw a good decline. So it did exactly that thing on this day, and then there was a decline. And after yesterday's bullish engulfing, it has shown a continuation move to complete the target. So 37,400, that is almost pretty done. Now यहाँ पे I am like very 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 cautious. Okay, why I'm very cautious? Because it is the melting point of a lot of things. You are going to see some severe resistances coming from past, and this is also your top का जो ट्रेंड लाइन है वहां से भी दिस इज नॉट अ नॉर्मल ट्रेंड लाइन. एंड यू हैव अ अनफिल्ड गैप एरिया. सो लास्ट टाइम की जो पूरी गिरावट थी, इट केम फ्रॉम एन अनफिल्ड गैप एरिया, एंड दैट इज वेयर वी आर सिटिंग राइट नाउ. सो बी वेरी केयरफुल इन दिस जोन. कल के लेवल्स में डिस्कस करूंगा, बट बी एक्सट्रीमली केयरफुल. एंड आई थिंक once we are done with maybe 37,600, this is looking very shaky to me. So be extremely careful. हमारा प्राइस और टाइम कॉन्फ्लुएंस दोनों हो चुका है. ओके, इफ यू रिमेंबर 2 अगस्त तक की तेजी की मैंने बात की थी कि मार्केट या तो एक्सपायरी तक या मे बी जस्ट 1 or 2 डे हियर एंड देयर. अप टू 2 अगस्त आई थिंक मार्केट इज बुलिश, एंड आफ्टर दैट market can become bearish if we break the support levels after reaching the targets. So we have reached the targets, we are reaching the price and the time conjunction both. Now once the market starts to reverse on a daily basis, it will be completing its entire up move, and then we should be starting the next leg of decline, which कहाँ तक जाएगा I don't know.
ठीक है। सो अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, कोई बहुत बड़ी फोरकास्टिंग नहीं करेंगे, एक व्यू और कॉन्टेक्स्ट को हम समझ के चलेंगे। अब आते हैं हमारे लेवल्स पे कि कल हम कैसे काम करें। सो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के पूरे अपमूव में एक हाईलाइट था, और वो हाईलाइट क्या था दोस्तों, कि बोथ दीज इंडाइसेस दे हैव क्लोज्ड वेरी क्लोज टू द वीवैप। सो आफ्टर सच अ बिग रैली, अगर ये ऐसा चीज होता है तो ये अगले दिन का कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता है कि अगले दिन किसी भी प्रकार का अगर कमजोरी हुआ, ठीक है, तो इट कैन फॉल डाउन इन द सेम मैनर। ऑल राइट। सो दैट इज वन कॉन्टेक्चुअल पार्ट जो हमें कल ध्यान में रखना है। दूसरी बात, इफ यू लुक हियर ऑन दिस चार्ट, दिस इज द मंथली लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म चार्ट। So we are approaching a very massive resistance zone. Okay, so as you can see, this is a very strong supply zone. So be extremely careful in this area. फ्यूचर्स ट्रेडिंग को थोड़ा आप ध्यान देना, बहुत ज़्यादा पोजीशंस वगैरह को होल्ड ना करें। ओके, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन। नाउ हियर व्हाट इज द plan for action plan for tomorrow? So it's very simple. This today's high 37,400. Okay, so 37,400 today's high is my mob level. So I will just write it down. The mob level for tomorrow is 37,450. Okay, let's say 450. So that is the make or break level for tomorrow's session. Above this, there is one scope for 37,000, say 650, 37,650. And below 37,450, below the mob level, bears are simply waiting. Okay, so below 37,400, once we start to reverse in this lower high lower low structure, I think entire gap filling is possible in the same day. So पहला target है मेरा 36,750 and second target will be 36,350. ओके, सो ये कल का प्लान है। अब अगर गैप अप खुलता है तो अगेन बिकम वेरी कॉशियस, डोंट ट्राई टू शॉर्ट अर्ली, सी नेवर फेड एनी गुड ब्रेकअवे मूव। ये मैंने ट्रेनिंग में भी आपको काफी बार सिखाया है। डोंट बी दी अर्ली सेलर। आप सिंपल लॉजिक से सोचो, अगर ये बाजार, ठीक है, ये बाजार आज 9:15 पे ऐसे खुल रहा है, ओके, सो उसके पास पूरा दिन है फेड करने के लिए। टू थिंग्स विल हैपन, आइदर द फेडिंग विल स्टार्ट एंड इट विल कंटिन्यू इमीडिएटली, ठीक है, तो गैप अप होने के बाद फ्लॉप, या फिर ये पूरा दिन ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा या अप डाउन करेगा और लास्ट में होगा अगर होना है तो, ठीक है। ये होता है कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सो अगर जब आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया और आप देख रहे हो कि ये इसके ऊपर चला गया, तो गेम ओवर, वहीं पे निकल जाओ, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है अभी। अब जो भी होगा ये लास्ट में होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। सो ये जो छोटी छोटी बातें ना, ये हमें जो है थोड़ा ध्यान में रखनी चाहिए। तो कल अगर गैप अप होता है तो अबाउ द गैप, till the gap is like sustaining, don't preempt any short. You can probably try here at these levels. These are quite a stretched levels, especially this 200 point zone जो है 37,650, 37,650 से लेके 37,850, ये जो 200 पॉइंट है, यहाँ पे बिल्कुल भी आप प्रीएम्प्टिव शॉट मार सकते हो। आपको स्टॉप लॉस जो है 38 स्ट्राइक प्राइस के ऊपर लगाना होगा, 3850 और समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस इज अ नाइस जोन फॉर अ प्रीएम्प्टिव शॉट फॉर अ अगेन बैक टेस्ट ऑफ योर 37,450 एंड मे बी 37,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, वहां तक। बट ये बीच में कोई काम करने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो या तो एक्सट्रीम लेवल से आप फेड करो, या फिर अगर ये कुछ स्ट्रक्चर जब बदल जाए, गैप अप करके फिर ये नीचे आ जाए, ऐसे फेड कर दे, प्रीवियस डे हाई को ब्रीच करके फेड कर दे, तब इसको शॉर्ट में आ जाओ। तीसरा तरीका है कि वी वैप के नीचे अगर जा रहा है तो फिर शॉर्ट में आओ, ठीक है। सो देर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन गेज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट एंड प्लान योर ट्रेड्स अकॉर्डिंगली, डोंट जस्ट डू रैंडमली, ठीक है। सो कहने का बस यही मतलब था। गैप डाउन अगर होता है तो अगेन इट्स अ बेरिश साइन एंड किसी भी पुल बैक पे फिर शॉर्टिंग करना चाहिए, ठीक है। और सो दैट्स इट, गैप अप एंड गैप डाउन। बाकी साइडवेज खुला तो लेवल टू लेवल जो है हमें काम करना होगा, ठीक है। सो दैट इज द अपडेट ऑन द bank nifty market. So we have reached a very crucial zone and now let us see what happens, क्योंकि ये अब या तो कल या तो मंडे से गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जस्ट टू ऐड कि मैं नेक्स्ट वीक नहीं हूँ दोस्तों, आई एम ट्रैवलिंग। सो संडे को मैं वीकली एनालिसिस में प्रेजेंट कर दूंगा आपके सामने, बट फ्रॉम मंडे टू थर्सडे आई एम नॉट देयर। सो नेक्स्ट पूरा वीक जो है आई विल नॉट बी देयर। सो हम कोई भी लाइव सेशन वगैरह नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली।
और नेक्स्ट वीक ही मार्केट में जो है ना मेजर एक्शन होगा एक्चुअली में. So that is one thing. Secondly, all those who wish to join for the training, so you have an opportunity till next 2-3 days. आप इसमें WhatsApp करके आप join कर सकते हैं, क्योंकि next फिर पूरा week में नहीं हूँ. So I will not be there to communicate. So आप अभी join कर लो, that will be better. चलिए, let's take some stock queries. I think वी हैव स्पोकन इनफ, और स्टॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि स्टॉक की दुनिया में आई थिंक बहुत ही ट्रिमेंडस हमें मूव्स जो हैं देखने को मिले हैं. स्टार्टिंग विथ योर बजाज फाइनेंस. सो टुडे 10.63%. सो दिस इज द योर हीट मैप, एंड बजाज फाइनेंस 10%, कोटक बैंक 4.5%. हालांकि इसमें मुझे कुछ बुलिशनेस नहीं था, बट या बजाज फाइनेंस, दिस वाज आवर ट्रेड, राइट. एंड व्हाट एल्स, इंडसइंड में भी, हालांकि मैं लॉन्ग नहीं सजेस्ट करता हूं, बट इसमें भी हायर लेवल्स की बात हमने करी थी. पीवीआर ने न्यू हाई बनाया, उसको हमने डिस्कस किया था. ओके, एंड व्हाट एल्स. सो दीज वर सम ऑफ द big moves coming in ICICI Bank, Bajaj Finance especially. So the heat map was pretty good, but the problem is, despite such a move, आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, इट्स वेरी स्मॉल फॉर यू टू सी, फॉन्ट साइज काफी छोटा है, बट check the mid cap index and the small cap index. So I am very disappointed with the broader market participation. So that is clearly missing. Okay, that is clearly missing in today's up move. So that is something which I don't like. Let's see, maybe अगर कल परसों में participation आता है, तो फिर probably this entire move will have some future legs to it. Okay, so that is one thing. All right, let's take some of your stock queries. Stocks पे हम आ जाते हैं. दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, सपोर्ट करना ना भूलें. And all those who wish to join for the training, you can WhatsApp and join as soon as possible. So let's start this, and also do let me know how did you like the new interface. I'm using it for the first time, so I'm not sure कि आपके सामने किस तरीके से ये present हो रहा है. There needs to be some changes to be made actually. I think the fonts and all, they are very small, so I'll do it. या सो बहुत क्वेरीज हैं आज तो स्टॉक्स में, मतलब इतनी क्वेरीज हैं कि क्या बताऊं मैं. सो चंबल फर्टिलाइजर, फर्स्ट क्वेरी, चंबल फर्टिलाइजर. एंड वन मोर थिंग, यू कैन डू सुपर चैट. अगर आपको सुपर चैट करना है तो आप सुपर चैट करके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो. आई थिंक दैट इज वर्किंग ऑन दिस चैनल, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. चंबल फर्टिलाइजर देखो, सारे टाइम फ्रेम्स पे अब हम एनालाइज करेंगे, ठीक है. So what is the monthly chart saying? Chambal fertilizer is in a downtrend. Weekly chart में एक छोटा pullback है. So I think 350 rupees can come. Okay, so 350 जो है 350 rupees के आसपास ये आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है. सो दैट इज द अपडेट. अगर आपको ट्रेल करना है तो आप 300 के नीचे जो है इसे ट्रेल कीजिए. दैट इज द लास्ट सपोर्ट इन चंबल फर्टिलाइजर. अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्टॉक एक बड़े डाउन ट्रेंड में है, इसमें कोई भी डिनाइल नहीं है, ठीक है. So I think 350 can come, but be very careful. These are your bearish counters. तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा कोई बुलिश नहीं होना चाहता, ठीक है. निफ्टी एनालिसिस मैंने नहीं किया. निफ्टी एनालिसिस आई थिंक आई हैव डन. ओके, निफ्टी एनालिसिस इज मिसिंग. सो इसका भी वही फंडा है कि आज का जो हाई है दैट विल बिकम योर मॉब लेवल. सो योर 16,920 ये आपका मॉब लेवल है. ऊपर में 980 और मे बी 1750, वो दो अपसाइड टारगेट होंगे. एंड बिलो दिस इट्स बेरिश फॉर एंटायर गैप फिलिंग. सिंपल है. आज के हाई के ऊपर तेजी है, आज के हाई के नीचे बेरिश है. इट्स वेरी सिंपल, ठीक है. नेक्स्ट इज आइशर मोटर. आइशर मोटर्स इस समय थोड़ा सा वेट करना मेरे ख्याल से ठीक है. आई डोंट वांट टू बाय almost at the top, although the stock is nice and great and all those things are fine. See, you can do one thing: either you buy at 2950 with a stop loss of 2800, or you wait for a couple of more days. So this is the heavy resistance, and now it should act as a support.
The logic is that, so there is a big range, from 2950 to 3050. So look to buy somewhere here. Maybe I think you will get somewhere under 3000. So that can be good entry, and for in cash market, not in future. And maintain 2800 as a stop loss. एंड नेक्स्ट टारगेट आपको पता ही है, बहुत बड़ा टारगेट है, 3500 पहला टारगेट है, ठीक है। 3500 जो है ये पहला टारगेट है। सो आई थिंक ये आपकी क्वेरी में ले चुका हूँ। नाउ इफ यू लुक द आइशर मोटर फ्रॉम द बिगर पर्सपेक्टिव, सो वी आर क्लोज टू हिटिंग द प्रीवियस ऑल टाइम हाई विच इज 3320, इसीलिए मैंने जो है 3500 का आपको टारगेट दिया। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर, हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है। So look to buy in this range. If you look at the weekly chart, you can clearly see it's sitting where? It's sitting at the previous highs, right? So it's consolidating. There are two weekly candles. It's consolidating at the previous highs. So this entire zone is a resistance which is acting as a support. So you should buy in this zone. So that's fair enough. So 2800 will be your stop loss, and then let's see where it goes. नेक्स्ट क्वेरी है आपका टाटा मोटर्स। ओके, सो टाटा मोटर्स मैंने कहा था कि आज इस पे वापस से डिस्कशन करेंगे। सो हियर वी आर टाटा मोटर्स पे। क्या एनालिसिस है? सी टाटा मोटर्स में एज ऑफ नाउ आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, लेट्स वेट, एंड अगेन इसे हम वीकेंड में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई हैव प्लान समथिंग फॉर टाटा मोटर्स, लेट्स वेट। नेक्स्ट क्वेरी हम है हमारे सामने स्टार हेल्थ और समथिंग। Star Health is what? Strides Pharma, I think, right? So if it is the correct stock, do let me know. So देखो, अगर यही वाला आपका क्वेरी है, स्टार हेल्थ और स्ट्राइड्स फार्मा, then it's a bearish counter दोस्त। फार्मा में most of the stocks they are performing very very bad. So आप जो है इनमें लॉन्ग में ना फंसें, यही मेरी सलाह होगी। अगर आपने लॉन्ग किया है तो 320 का स्टॉप लॉस लगाएं, 315 का स्टॉप लॉस लगाएं। सी इट्स इवेंचुअली गोइंग टू क्रैक। ओके, अर्निंग्स आ रही है, अर्निंग्स में आजकल सारे स्टॉक जो है जंप कर रहे हैं। इवन इफ इट जंप्स, अधिक से अधिक कहाँ जाएगा? 370 375, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये स्ट्राइड्स पे है। अगर आपकी दूसरी क्वेरी कुछ है विच इज़ आई थिंक स्टार हेल्थ और समथिंग, राइट? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस इंडिया, ठीक है। ओके, सो स्टार हेल्थ अगर ये आपकी क्वेरी है, सो आई थिंक ये वाला चार्ट काफ़ी बेहतर है, बट द ओनली थिंग इज़ कि ये रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी आ चुका है। सो देयर इज़ अ बिग रेजिस्टेंस। सो आई थिंक वॉच आउट, प्रॉफिट बुकिंग करना ही मेरे ख्याल से जो है सही होगा यहाँ पे, ठीक है। सो देयर इज़ अ बिग रेजिस्टेंस कमिंग ओवर हियर, and I think somewhere anywhere just under 800, this is the zone. Watch out, and you can book in this area, ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी को लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेरी है नोवोको विस्टा। नोवोको विस्टा, ओके। सी नोवोको विस्टा अगेन डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में बहुत ज़्यादा विश्वास मैं नहीं करता। सो अगर आप इसमें लॉन्ग है तो यू ट्रेल कर सकते हैं, 295 पे ट्रेल कर सकते हैं, and maybe it can go 50 points higher. That's it, not much, not expecting much. नेक्स्ट क्वेरी है एच डी एफ सी बैंक। सी एच डी एफ सी बैंक में 1000 बार बोल चुका हूँ, एक ही ट्रेड है कि बाय नियर 1300, सेल नियर 1500, दैट्स इट। 200 पॉइंट के रेंज में ही चलने वाला है। पिछले काफ़ी दिनों से बोल चुका हूँ मैं, और पिछले 4 महीने 3 महीने से इसी रेंज में है, ठीक है। सो 1300 इज सेफ ऑन द लोअर साइड, 1500 इज नॉट इवन क्रॉस्ड। So that's it, okay, and it has approached the 233 moving average. There is an unfilled gap after that merger fiasco. So there is an unfilled gap at 1464. It's developing a inverted head and shoulder and all those things. But what will happen? Inverted head and shoulder का breakout failure कराएगा. So I think it can pop up, and then everybody will turn buyer, or breakout traders आएंगे, and that's it. And then it will again crumble down. So I'm not very gung ho about HDFC Bank. I think these two tops, they are going to remain a nightmare for HDFC Bank. I don't see this stock crossing above 1500. I don't see this stock breaking significantly below 1300, ठीक है। अभी तक मई जून जुलाई, अभी तक 100 डेज में ये प्रिडिक्शन अभी तक सही हुई है। 3 महीने से यही प्रिडिक्शन चल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेरी है गार्डन रीच
समथिंग गार्डन रीच चिप्स एंड ऑल, ठीक है। सो या सो दिस स्टॉक इज जस्ट एन एवरेज स्टॉक, कोई इसमें ट्रेंड एज सच नहीं है। सपोज अगर आप इसमें बायर हैं तो आप इसको 236 का स्टॉप लॉस लगाइए, दैट्स इट। कोई इसमें कोई चीज़ मुझे ग्रेट नहीं दिख रहा है। द ओनली bad thing I can see is that there was a large volume which generated the all time high and then it was sold off. So this was a you can say a bull trap, okay, and it's gone. So इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अब these type of stocks डिपेंड्स ऑन मार्केट, अगर मार्केट तेजी में रहेगा तो इवन दे ट्राई टू आउट परफॉर्म। सो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट कीप अ स्टॉप लॉस। सो फिलहाल यहाँ पे 235 का ही स्टॉप लॉस है। कोरोमंडल आई थिंक कल मैं ले चुका हूँ, प्रॉफिट बुकिंग की बात हमने कर दी है तो मैं उसको नहीं लूंगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर ब्रिटानिया। नेक्स्ट क्वेरी ब्रिटानिया है। निफ्टी लेवल्स में बता चुका हूँ, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो ज़रा सा। आज के हाई के ऊपर तेजी है, आज के हाई के नीचे मंदी है, वेरी सिंपल। या आज के क्लोज के ऊपर तेजी एंड क्लोज के नीचे मंदी, इट्स लाइक दैट। सो ब्रिटानिया, सिर्फ ब्रिटानिया इज बुलिश काउंटर राइट नाउ। सो आप इसे जो है ट्रेल करें 3750 रुपीज़ पे, आप इसे ट्रेल करें। आई थिंक एक और 4000 का हाई इसमें प्रिंट होना बाकी है एंड ओवर देयर वॉच आउट की ये क्या करता है। आइडियली वॉट इट कैन डू इज इट कैन reach that level and then either it will give a bigger breakout or it will turn into a failure. So आप ट्रेल करेंगे वही सही होगा। सो अभी 3750 विल बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर ब्रिटानिया। 4000 का टारगेट है, 4000 पे आप बुक कर सकते हैं इफ यू वांट। सन फार्मा फॉर लॉन्ग, सी सन फार्मा कल हमने जो है डिस्कशन में किया था कि स्टॉक बहुत ही सही तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है, बट अभी इट्स टू अर्ली, अर्निंग्स भी आनी है तो अर्निंग्स आई थिंक शायद आ चुकी होंगी आज। सो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ डेज। आप इसे जो है वीकली एनालिसिस में पूछिएगा संडे के दिन, कल का दिन मैं और देखना चाहूँगा। वी विल हैव अ गुड ट्रेड इन सन फार्मा, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ओके। सो वी हैव हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स that are suggesting an up move in Sun Pharma, up move till 980,000 bucks on the lower side। अगर ऐसे में देखूं तो मुझे नहीं लगता कि सन फार्मा 840 के नीचे जाने वाला है। सो एनी डिप दैट कम्स यू कैन बाय, बट 840 के नीचे मैं इसे निकाल दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ है। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज योर भारती एयरटेल। इंटरेस्टिंग काउंटर भारती एयरटेल। सी भारती एयरटेल में all those who are spamming, you will be blocked forever. So don't repeat your queries, don't spam, okay। repeat कर सकते हो, spam मत करो। सो व्हाट इज दिस भारती एयरटेल? जी भारती एयरटेल में दोस्तों अभी मैं वेट करना चाहूँगा, ओके। व्हाई? बिकॉज आई वांट अ लेवल क्लोजर टू 620 एंड 640, ओके। सो व्हाट इज द लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर भारती एयरटेल? ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, फैंटास्टिक है, ओके। एंड आई थिंक वी हैव मेड अ बॉटम हियर in the last couple of weeks near 627. So basically we are anticipating one down move till say 645 and then a big rally to come. So let's wait till 645 and then we can think of going long. You can buy near 645 and you can keep say 620 615 as a stop loss and target will be straight away 750। छोटा मोटा टारगेट इसमें मैं दूंगा ही नहीं। So it will be a big target, positional buying, positional big target, ठीक है। So that's it, and then you have Mahindra and Mahindra M&M. So M&M right now is best left avoid. Why? Because see the stock has run up too much. I think it's a very momentum driven play and I don't like to participate in such kind of plays, okay। It's no doubt very strong as of now। हमने बहुत ही तेजी इसमें M&M में कही है, वो चीज़ हो रहा है। See, I like to play safe, so I would like to wait for this retest of $1,000 एंड देन हम इसे प्ले करेंगे। अगर आपको मोमेंटम प्ले करना है कल के लिए तो कल अगर ये स्टॉक 1150 के ऊपर ट्रेड करता है तो आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस होगा 1120, 30 रुपए के रिस्क से आप इसको जो है प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इट शुड मूव हाइयर, सिर्फ इंट्राडे प्ले है। अगर ऊपर के स्तर पे क्लोज होता है लाइक 1190 1200 के आसपास समवेयर एट द टॉप, then you can carry it and whatever cost is there, that cost or maybe this can be final stop loss, ठीक है। So that is the outlook।
रिलायंस में लॉन्ग करना चाहते हैं तो रिलायंस में मैंने ऑलरेडी अपने व्यूज़ रख दिए हैं कि हम लॉन्ग थे, और मैंने यहाँ पे 1500 सॉरी 2500 वाले जोन में मैंने कहा था एग्जिट कर देना, और उसके बाद ये क्रैश हो गया. नाउ रिलायंस इज डूइंग अ वेरी स्मार्ट गेम. इट इज डेफिनेटली एंटाइसिंग पीपल एंड वांट टू ट्रैप एज मेनी एज पॉसिबल. सो रिलायंस, दिस बॉटम विल बी ब्रोकन, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको. ठीक है, अब ये यहाँ से ब्रेक हो, यहाँ जाके फिर ब्रेक हो, दैट आई एम नॉट कंसर्न. दिस बॉटम विल बी ब्रोकन एंड हेंस आई एम नॉट अ बायर इन रिलायंस. ओके, अगर आप बायर हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए. आप 2350 2370 का स्टॉप लॉस लेके चलिए. अगर आपको एक छलांग ऊपर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है आपका 2690 2700 पे एक पेंडिंग गैप है, और मैं इसी लेवल का इंतजार भी कर रहा हूँ कि यहाँ मुझे मिलेगा तो हम रिलायंस को जो है शॉर्ट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी. अगर आपको ऊपर की रैली मिल गई तो ठीक है, वेरी वेरी नाइस, यू कैन प्रॉफिट फ्रॉम द लॉन्ग्स एंड देन थिंक ऑफ गोइंग शॉर्ट्स. मेरा व्यू कुछ नहीं है रिलायंस पे इस समय. बहुत रेयर होता है कि मेरा रिलायंस पे कोई व्यू नहीं है. कि टाटा पावर की बात करेंगे तो टाटा पावर में बहुत सारे रिटेल स्टॉक्स वाले सब फंसे हैं ऊपर के लेवल पे. मैंने 1000 बार चेतावनी दे दी है, इस स्टॉक से दूर रहें, इसका टॉप बन चुका है, ये लेवल जो है वापस से आना बहुत ही मुश्किल है. सो यूटिलाइज एनी रैली दैट कम्स टू एग्जिट दिस स्टॉक. मेरी तरफ से इस स्टॉक में नाना, बिल्कुल नाना है. एनटीपीसी, see NTPC, Coal India, ONGC, all the energy names, they are bullish. They are definitely bullish. So NTPC is sitting on a trend line resistance. It should break out. So अगर आप buyer हैं इसमें तो just keep one thing in mind. Keep 144 as a stop loss. That's a fantastic level. 144 is the stop loss, and above 152 we are going to see good moves in this stock. Okay. So previous highs के आसपास आना जो है बहुत ही possible हो जाएगा, and that should be a good area to take out the profits near 170 के आसपास. Now remember all these things guys कि निफ्टी बैंक निफ्टी अपने वल्नरेबल जोन में है. अब क्या होगा कि अगर बाजार यहाँ से गिरना शुरू करता है आज मंडे ट्यूसडे 1 2 3 दिन में, तो ऑल द स्टॉक्स विल आल्सो बी इम्पैक्टेड. ओके, सो यू नीड टू कीप योर एग्जिट मैकेनिज्म इन प्लेस, क्योंकि जब वो गिरावट शुरू होगी तो फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा. सो अपना पहले से ही, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो या कॉस्ट टू कॉस्ट हो, अपनी एग्जिट मैकेनिज्म को आप जो है बना के चलिए. ठीक है, वो हमेशा फायदेमंद होता है. जी एन ए एक्सएल, GNAXL. लेट मी सी इस नए चैनल पे कौन सबसे पहले सुपर चैट करता है. इसी बहाने सुपर चैट भी चेक हो जाएगा whether it is working or not. So I like this chart. Why I like this chart is because of the risk reward that it is offering, plus the bottoming pattern, plus the volatility contraction, and the crossing of 200-day or 233 moving average. And there has been some good interest on the volume side in this phase. So I like this chart overall. uh, और यहाँ पे आई थिंक ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी भी है 600 के लेवल, नॉट 600, 550 560 के आसपास. सो इफ यू हैव बॉट दिस स्टॉक हियर, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ व्हाट 530 और 520, दैट्स इट. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. अगर ये बाउंस करता है तो बहुत अच्छी बात होगी. ओके, so 529 or 525, you can keep that as a stop loss, and let's see what happens. If it spikes up, then very nice. बट आज जो हिसाब से स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स है, मुझे बड़ा डाउट है कि इस टाइप के स्टॉक्स चलेंगे कि नहीं चलेंगे. ठीक है दोस्तों, 1 घंटा अप्रोच हो रहा है, सो हम वीडियो को अभी बंद करेंगे. लेट्स टेक 1 or 2 क्वेरीज मैक्सिमम एंड देन वी कैन वाइंड अप फॉर टुडे. एक क्वेरी मुझे दिखाई दे रहा है ऑल कार्गो पे, all cargo logistics. So let me take this query. So I like the chart uh, in the first impression, not because it is in a uptrend, but I like that it is fighting. Okay, it is fighting to come in some sort of a uptrend. So that is always desirable. So क्या सिचुएशन है यहाँ पे, देखो सिचुएशन ये है कि इसमें काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन सही है. ओके, तो अब इसमें जो है एक ही स्टॉप लॉस हमें लेके चलना है, वो है 280 का. दैट्स इट. So keep a stop loss of 280. Hope for the best. If it starts to move higher, very nice. And book your profits near 250 के आसपास. ठीक है. आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन दीज काउंटर्स बिकॉज देखो जनरली क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब थोड़ा ऊपर जाएंगे और बीच में फुस हो जाएंगे. दैट इज मोस्ट लाइकली गोइंग टू हैपन विद ऑल दीज टाइप ऑफ
downtrending stocks turning bullish, coming into the earnings, and giving some sort of a breakout. ये सेम स्क्रिप्ट है, हर बार यही होता है. लूपिन की बात करते हैं. आई थिंक कल या परसों शायद मैंने इसे लिया था. बहुत ही बेरिश काउंटर है, और मैंने जो है इसमें से आपको शॉर्ट भी करने की सलाह दी थी कि कोई भी अगर शॉर्ट है तो 660 के ऊपर का, 670-75 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, और टारगेट जो है 515 का है. सो दैट इज फॉर लूपिन. कोफोर्ज की बात कर लेते हैं. सो आईटी नेम है, आज आईटी नेम्स में काफ़ी जो है अच्छी रैली हुई थी. सो दिस स्टॉक इज ऑल्सो ट्राइंग इट्स बेस्ट. Now, the good and bad thing. The bad thing is that the stock is at resistance. The good thing is that finally it is trying to reverse in a bullish trend. सो आई डोंट नो आपका कहाँ बाइंग है, क्या है. आपने सिर्फ नाम लिखा है तो आई कांट कमेंट. ठीक है. सो दैट विल बी ऑल इन टूडेज सेशन. आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड 1 hour लाइव स्ट्रीमिंग. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एंड चैनल को दोस्तों सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें. एंड ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग, you are welcome. You can WhatsApp and you can join. Thank you so much. Take care. Good night. Jai Mata Di.